हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमेश मैथ्स क्लासेस। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th में हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10th। पहले जानते हैं हम कोप्राइम नंबर्स। इफ जीसीडी ऑफ एनी टू नंबर इज 1 देन दे आर सेड टू बी कोप्राइम। 5 के पास डिवाइजर है 1 एंड 5। 6 के पास डिवाइजर है 1, 2, 3 एंड 6। स्टूडेंट्स, इनके पास कॉमन डिवाइजर है 1, तो 5 एंड 6 आर रिलेटिवली कोप्राइम। एग्जाम्पल एक और लिखते हैं, देखो 2। स्टूडेंट्स, 2 के पास डिवाइजर है 1 एंड 2। 3 के पास डिवाइजर है 1 एंड 3। इनके पास कॉमन डिवाइजर आ रहा है 1, तो 2 एंड 3 आर आल्सो कोप्राइम। स्टूडेंट्स, हमेशा 2 नंबर आपस में कोप्राइम होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो हमें सपोज कर लेना है कि वो नंबर रैशनल है और लास्ट में कंट्राडिक्शन शो कर देनी है। हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी रूट 5 इज irrational नंबर। रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो वो ए बाई बी फॉर्म का होगा, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपन बी स्क्वेयर। ये इंप्लाई करता है 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये इंप्लाई कर रहा है, देखो 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कर रही है, देखो लेट p बी a prime number if p divides a square then p divides a। अरे p कोई भी प्राइम नंबर है, अगर p ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो p a को भी डिवाइड कर देगा। तो इसी थ्योरम का हमने यूज किया है। स्टूडेंट्स, अब देखो 5 डिवाइड कर रहे हैं को, तो ये इस फॉर्म का होगा और हमें कुछ इंटीजर मिलेगा। तो हमने किया t, हमें इंटीजर मिल गया। दिस इम्प्लाई 5t इज इक्वल टू a। और स्टूडेंट्स, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 1। अब हमें करना है पुट a इन इक्वेशन 1। तो देखो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25t स्क्वायर। दिस इम्प्लाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। हमें मिला b स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। इट मीन्स दिस इम्प्लाई 5 divides b square, therefore 5 divides t by theorem 1। आपको लिखनी है ये थ्योरम। अब स्टूडेंट्स देखो 5 को हमने एज्यूम किया था कि a एंड b आर को प्राइम है, बट a और b को डिवाइड कर दिया 5 ने, तो a एंड b को प्राइम नहीं रहे, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम इसको मान लेते हैं थर्ड एंड इसको मानते हैं हम फोर्थ रिजल्ट। ओके, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we conclude
that 5 is common factor of both A and B, but this contradicts our supposition that A and B are coprime. Hence, root 5 is irrational number. स्टूडेंट्स देखो, हमने शुरू में एज्यूम किया था कि ए एंड बी कोप्राइम है तो इनका डिवाइजर ओनली 1 होगा, बट हमें कंक्लूजन क्या आया कि 5 ने डिवाइड कर दिया ए को एंड 5 ने डिवाइड कर दिया बी को, तो एक और कॉमन डिवाइजर हमें मिल गया, तो ए एंड बी कोप्राइम नहीं रहे, कंट्राडिक्शन आ गई, तो जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था. Hence root 5 is irrational number. Okay, next, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. स्टूडेंट्स हम फिर एज्यूम करेंगे ये एक रैशनल नंबर है. लेट अस एज्यूम टू द contrary 3 plus 2 root 5 is rational. Okay, so let 3 plus 2 root 5 is equal to A by B form, where A and B are coprime and B is not equal to 0. Students, 2 root 5 is equal to A by B minus 3. This implies root 5 is equal to A by B minus 3 into 1 by 2. This implies root 5 is equal to A minus 3B divided by 2B. और स्टूडेंट्स देखो, A and B हमारे पास थे इंटीजर, सिंस A and B आर इंटीजर. स्टूडेंट्स A and B अगर इंटीजर हैं तो देयरफॉर A minus 3B अपॉन 2B क्या आएगा, इज रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होगा ये. स्टूडेंट्स ये इंप्लाई कर रहा है रूट 5 इज रैशनल नंबर, बट अभी हमने प्रूव किया है कि रूट 5 इज irrational. So this show that our assumption is wrong. So 3 plus 2 root 5 is irrational number. स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले रैशनल एज्यूम किया, फिर ये क्या होगा, ए बाई बी फॉर्म का होगा, ए एंड बी आर कोप्राइम. और स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारी रैशनल आ गई, तो और ये इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड भी रैशनल होगी, तो हमने इसको रैशनल रूट 5 को रैशनल प्रूव किया, बट रूट 5 एक इरेशनल नंबर था, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई. तो 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल नंबर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1 बाई रूट 2. स्टूडेंट्स फिर हमें क्या करना है, एज्यूम करना है रैशनल नंबर. लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 1 by root 2 is rational. Since 1 by root 2 रैशनल नंबर है, तो 1 by root 2 a by b फॉर्म होगा, where a and b are
co-prime. Okay, and b is not equal to 0. रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू से डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज a by b. दिस इम्प्लाई रूट टू इज इक्वल टू a by b. This imply root 2 is equal to 2a upon b. Students, since a and b are integers, हैं, तो 2a upon b is rational number होगा. This imply root 2 is rational number, but root 2 is irrational number है. This show that our assumption is wrong. So 1 by root 2 is irrational number. Next, 7 root 5. स्टूडेंट्स, हम फिर अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और लास्ट में कंट्राडिक्शन दिखा देंगे. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी स्टूडेंट्स, हमने अज्यूम किया कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए कि 7 रूट 5 इज रैशनल नंबर है. ओके, तो लेट 7 रूट 5 ए बाई बी फॉर्म का होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाई रूट 5 इज इक्वल टू a upon 7b. स्टूडेंट्स, a एंड b हमारे पास इंटीजर्स हैं. a and b are integers. Therefore, a upon 7b is rational number. Okay. Students, this imply root 5 is रैशनल नंबर, बट हमने प्रूव किया था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. स्टूडेंट्स, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको डायरेक्ट बता देना कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए तो आपको प्रूव करना है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. इसके बाद आपको प्रूव लिखना है. फिर this shows that our assumption is wrong. So 7 root 5 is irrational number. Okay, next question. 6 plus root 2. स्टूडेंट्स, हम फिर एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है कंट्राडिक्शन लाने के लिए. लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 6 plus root 2 is रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ए बाई बी फॉर्म का होगा, वेयर ए एंड बी आर co-prime and b is not equal to 0.
Okay, students, this imply root 2 is equal to a by b minus 6. Students, this imply a root 2 is equal to a minus 6b divided by b. स्टूडेंट्स, ए एंड बी हमारे पास इंटीजर्स हैं. अगर ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो ए माइनस 6b अपॉन बी क्या आएगा? इज रैशनल नंबर. ओके, अब दिस कंडीशन अप्लाई रूट 2 इज रैशनल नंबर. बट स्टूडेंट, रूट 2 एक ही रैशनल नंबर है. जैसे हमने रूट 5 का प्रूव किया है कि रैशनल नंबर, ऐसे ही आपको 5 की जगह सभी जगह 2 रख देना है, तो रूट 2 का भी प्रूव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा निकल के आया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, बट रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, तो कंट्राडिक्शन आ गई. दिस शो दैट आवर assumption is wrong. So 6 plus 2 root 2 is irrational number. Okay. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है रूट 3 माइनस रूट 2. इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है. प्रूव दैट इज इरेशनल. स्टूडेंट्स, हम फिर एज्यूम करेंगे. लेट अस एज्यूम टू द contrary. Root 3 minus root 2 is rational number. स्टूडेंट्स, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a by b फॉर्म का होगा, वेयर a and b are co-prime and b is not equal to 0. स्टूडेंट्स, हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट 3 minus root 2 whole square is equal to a square divided by b square. This implies 3 plus 2 minus 2 root 3 root 2 is equal to a square divided by b square. This condition apply 5 minus 2 root 6 is equal to a square upon b square. This condition apply 5 minus a square upon b square is equal to 2 root 6. This imply 5b square minus a square upon 2b square is equal to root 6. स्टूडेंट्स, a एंड b हमारे पास क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स. अगर a एंड b इंटीजर्स हैं तो 5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज रैशनल नंबर होगा एक. दिस इंप्लाई रूट 6 इज रैशनल नंबर. बट root 6 is irrational number. This show that our assumption is wrong. So root 3 minus root 2
इज इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू।